Student, see the first question of the exercise. A 20-meter deep well with diameter 7 meter is dug and earth from the digging is evenly spread out to form a platform 22 meter by 14 meter. Find the height of the platform. स्टूडेंट यहाँ पर एक वेल यानी कुआं खोदा गया, डग किया गया, जिसका डायमीटर कितना था 20 मीटर और डेप्थ कितनी थी 7 मीटर की डेप्थ थी. तो यानी वो शेप कैसी होगी स्टूडेंट, एक सिलेंड्रिकल शेप होगा. नाउ जो भी डिगिंग मटेरियल निकला है, जो अर्थ निकली है, सॉइल निकला है, उसका एक प्लेटफॉर्म फॉर्म किया गया और वो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 22 मीटर और ब्रेथ कितनी है 14 मीटर. हमें हाइट बतानी है, यानी वो प्लेटफॉर्म किस शेप का होगा, क्यूबाइड का. सो उसकी हाइट हमें कैलकुलेट करनी है. स्टूडेंट आपको क्लियर है कि जितना वॉल्यूम सॉइल निकलेगा किससे, वेल से, वही सेम वॉल्यूम का हमने प्लेटफॉर्म बनाया, यानी दोनों शेप का वॉल्यूम सेम होगा. सी द क्वेश्चन. So this is the well of diameter 7 meter and the height 20 meter, and this is the platform. 22 is the length, 14 is breadth, and let h be the capital H be the height of platform. Now height of well, that is depth. H small h is equal to 20 meter and the radius of well small r is equal to 7 by 2 meter. So it is a cylindrical shape, so its volume will be pi r square h, that is pi into 7 by 2 into 7 by 2 into 20 meter cube. Now see, let height of the platform made is equal to capital H, क्योंकि small h मैंने वहां पे well की height ली है. So its length is equal to 22 meter and breadth is equal to 14 meter. So its volume will be 22 into 14 into capital H. This is length into breadth into height. Now according to question, both the volumes will be same. So 22 into 14 into capital H is equal to pi into 7 by 2 into 7 by 2 into 20. Now student, pi की जगह 22 by 7 लिखिए. ये 7 से 7 क्या हुआ, डिवाइड हो गया. और नाउ इधर राइट और लेफ्ट में दोनों जगह 22 है, तो आप उन्हें भी डिवाइड कर दीजिए. नाउ इट्स विल बी 14h इज इक्वल टू, एंड स्टूडेंट यहाँ 2 इंटू 2 4 है, इसे 20 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 20 विल बिकम 5, 4 and 20. Now see, this will become 14h is equal to 35 and is equal to h upon 35 upon 14, that will be equal to 2.5 meter. So this is the height of our platform. So see the next question.